ठीक है, तो वेलकम टू दिस चैनल एंड आज की जो हमारी वीडियो है ना वो ये है कि इंजीनियर जो है वो क्या कर सकता है। तो वेलकम टू दिस चैनल रिगाश एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये आपके सामने एक इमेज जो है ना डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन है जहाँ लिखा हुआ है व्हाट डज अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर डू। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो इंजीनियर का काम है वो क्या है। इसमें हम जॉब स्किल देखेंगे, इसमें रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और इसमें क्या काम होता है, सैलरी कितनी है, वो भी जो है ना हम इस वीडियो में देखेंगे। फाइंड आउट व्हाट अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर डज, how to get this job and what it takes to succeed as a manufacturing engineer. So अब हम देखते हैं इसका। Manufacturing engineering are responsible for ensuring that the products we use every day are made with quality and efficiency in mind. They commonly work with a team of other engineers, designers, and technicians to develop new manufacturing process or improve existing ones. Manufacturing engineers may also be tasked with overseeing the production of specific goods. This might include everything for checking on the status of individual components of the manufacturing article, इंटीरियर असेंबली लाइंस। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जॉब ड्यूटीज़, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो क्या होती हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग typically has a wide range of responsibilities which can include, मतलब इनकी जो है ना काफ़ी हाई लेवल पे काफ़ी बड़ी जो है ना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वर्किंग विद इंजीनियर्स इन अदर डिसिप्लिन टू क्रिएट न्यू डिज़ाइन फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट मीट कस्टमर नीड्स। मतलब ये न्यू प्रोडक्ट को जो है ना डिज़ाइन करेंगे जो कि कस्टमर को ज़रूरत होगी, कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक ये क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका डिज़ाइन भी जो है ना ये करेंगे। डेवलपिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस टू मेक द मोर एफिशिएंट, सेफ और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। मतलब ये जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक तो वो हो गया कि कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक हो, उसके बाद वो उनके लिए सेफ़ भी हो और जो उनके लिए इन्वायरमेंट है, मतलब जो उनका माहौल हो ना वो भी फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करें उन कस्टमर्स को। कंडक्टिंग फैसिलिटी स्टडी टू डिटरमाइन इफ proposed design will work in practice, evaluating machinery and tools to determine if they are appropriate for the task at hand, performing field tests of new equipment or processes to test how will they work in real world conditions, conducting research to identify new materials or methods that can be used in the manufacturing process, developing manufacturing process to ensure that they meet federal and industry standards for safety, conducting quality control procedures to ensure that products meet specifications, creating models and prototypes of new products। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सैलरी और उसकी आउटलुक देखते हैं कि भाई कितनी सैलरी होती है मिनिमम और मैक्सिमम, और उसके बाद जो है ना इसका थोड़ा सा आउटलुक देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सैलरी इज़ वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो इनकी सैलरीज है वो आपके एजुकेशन पे है कि आप मैट्रिक लेवल पे कर रहे हैं, एफएससी लेवल पे कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा है, कोई है बीएस है या एमफिल है, पीएचडी है, उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर आता है कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल है, एंड द साइज एंड इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी, और आपने किस साइज में किस कंपनी में जो है ना आपने किया हुआ है कि कंपनी का क्या साइज था, क्या इंडस्ट्री थी जहां आपने काम किया। दे में आल्सो earn एडिशनल compensation इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, मतलब ये है कि जितना आप पुराने होंगे तो उतना आपको बोनस भी दिया जाता है। जैसे कि मीडियन एनुअल सैलरी जो इसकी देखा जाए तो ये $40 पर आवर के ये जो है ना बंदे पे करते हैं, और इनके जो अगर मीडियन देखी जाए सैलरी तो $42,500 बनती है। मतलब पर आवर का इनका कितना बनता है, $40। और अगर टॉप 10% एनुअल सैलरी देखा जाए जो कि आज दुनिया में बंदे ले रहे हैं टॉप 10 में जो है ना, उनकी अगर सैलरी देखी जाए तो वो $60 पर आवर का ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं 1,22,000, $1,22,000 वो पर ईयर का ले रहे हैं। और कितने आवर वो ले रहे हैं, 60 पर आवर का ले रहे हो। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर is expected to grow faster than average over the next decade. Manufacturing companies will need to increase productivity and efficiency as they compete globally. In addition, demand for new and more sophisticated product is expected to continue, leading to a need for engineers to design and implement efficient product process. Manufacturing engineering job requirements, there are manufacturing engineering
typically need to have the following qualifications. Education, a bachelor degree is a minimum requirement for most manufacturing engineering jobs. Some employ prefer candidates who have a master degree in manufacturing engineer or a related field. अब देखें, अब जो इनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी एजुकेटेड या जो आपका स्टडी लेवल हो वो कम से कम जो है ना बैचलर हो। बैचलर कहते हैं बीएस को, मतलब आपने बीएस की 4 साल डिग्री की हुई हो। और चंद एक जो है ना वो मास्टर प्रेफर करते हैं, मतलब एमफिल की हुई हो। Many aspiring manufacturing engineers are earn degree in engineering disciplines such as medical, industrial, or manufacturing engineering. These programs typically include coursework in mathematics, engineering, physics, and chemistry. उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, सही है ना। Manufacturing engineering typically receives on-the-job training after they are hired. This training helps them learn the specific process and procedure of the company. It also helps them learn to the specific software and computer program the company uses. Certification and license के engineer who plan to work on public project need to earn their professional engineer license. Each state has different requirement for the PE license. Candidates also need to pass the fundamentals or engineering exams. उसके बाद आता है आपकी स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग स्किल्स है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग नीड द फॉलोइंग स्किल इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। टेक्निकल स्किल होनी चाहिए आपके पास। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर यूज टेक्निकल स्किल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर. They use a technical skill to research and develop new manufacturing process and producers. They also use technical skill to troubleshoot and solve manufacturing problems. Problem solving. Manufacturing engineering use their problem solving skills to identify and address issues that may affect production. They may also use their problem solving skill to find to improve existing process. Analytical अगर skill देखी जाए तो manufacturing engineering use analytical skills to solve problems and develop solution. They use analytical skill to review process and make improvement. They also use analytical skill to create and evaluate new process and products. Communication skill and manufacturing engineering communicate with a variety of people, including other engineer, managers, suppliers, and production staff. They need to be able to clearly convey information and ideas in writing and variably. Effective communication skill can help you collaborate with others, solve problems, and develop new process and products. तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने रिक्वायरमेंट देखी और एक जो इंजीनियर है जो मैन्युफैक्चर कर सकता है उसकी जॉब की कितनी मिनिमम पे है, क्या उसे बोनस मिल सकता है, उसको किस चीज़ की स्किल्स की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम किसी अच्छे से इंजीनियरिंग के टॉपिक के साथ वीडियो लाएंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।